Dielectric and their polarization. Dielectric and their polarization. Before study this topic, before knowing the dielectric, we should know about polar substance and non-polar substance. To understand the dielectric and their polarization, first we should know about polar substance and non-polar substance. So what is polar substance? Polar substance. Polar means pole, where pole is created. As we know that every substance in the universe is made from the atoms and molecules. So every molecule has a electron, proton and neutron because it's made up by a atom. So a molecule in which the total center of mass of positive charges means we can say that average position of proton does not coincide with the center of mass of the negative charges, that is the electron, has no external field is applied, it's called polar molecule. Means what? Try to understand. Suppose there is any substance. So in that substance, positive and negative charge is there. So the center of mass of net positive charge, that is the proton, does not coincide with the center of mass of net negative charges, that is the electron. Then a pole will be created. Pole will created means what? As we know that the number of positive and negative charges in any molecule or atom is same. So here the dipole is created. As you know that the direction of dipole is from negative to positive. So one dipole is created here. Okay. So polar substance are those substances in which a molecule present in which the center of mass of positive charges does not coincide with the center of mass of negative charges. When no external field is applied is called polar molecule. When no external field means without external field there would be a dipole because both the charges are separate. So a molecule in which the center of mass of पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है इसमें? पॉजिटिव चार्जेस तो एवरेज पोजीशन ऑफ प्रोटॉन डज नॉट coincide with the center of mass of negative charges. Center of mass of negative charge means what? Average position of electron. When, that is a very important point, when no external field is applied is called
polar molecule. Means any substance, like example, you can take example HCl, H2O, NH3, CO2, alcohol, etc. Suppose you just take an example of H2O. What is the structure of H2O? Main structure of H2O. So oxygen, that is a OH. So O has a negative charge and net positive charge of this is here. So what is the dipole moment, direction of dipole moment, as we have studied in first chapter, negative to positive always. So that is a dipole moment. Okay. So polar molecule does not have a symmetrical shape. That can be written. That is the important point. Polar molecule does not have symmetrical shape. Symmetrical shape नहीं होता है इसका. So a substance made up of polar molecule is known as polar substance. So we have defined the polar molecule here. So what is a polar substance? A substance made of polar molecule is known as polar substance. Polar substance. Okay. So first we have learned about the polar molecule, then the polar substance. So I am going to summarize this. Polar substance are those substance, polar molecule are those molecule in which the center of mass of net positive charge does not coincide with the center of mass of net negative charge. Their shape does not have a symmetrical shape. A polar molecule has a permanent electrical dipole. You can write another point. A polar molecule has permanent electrical dipole. परमानेंट डाइपोल होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हो या ना हो, उसमें ऑलरेडी डाइपोल होता ही है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर when no external field is applied is called, means without external field these type of substances have the polar that is called have the dipole. Okay. So effect of electric field on the substance. अगर हम ऐसे substance को electric field के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? So just let us try to understand. Effect of electric field on the polar substance. Suppose अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ये कोई पोलर सब्सटेंस है, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पे सपोज़ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट होते हैं, तो ये पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस. ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो अपना इनका खुद का
डाइपोल मोमेंट है, खुद का डाइपोल मोमेंट है। जब हम इसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो सबके सब पॉजिटिव सब इधर आ जाएंगे, ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ऐसे ये अलाइन हो जाएंगे। ये जो डिफरेंट मतलब यहाँ पे नेट फील्ड जो जीरो था, बिकॉज कि ये रेंडमली सब कुछ सारे मॉलिक्यूल जो है रेंडमली अलाइन थे, मतलब अलाइन नहीं थे, रेंडम वे में थे। अब यहाँ पे वो पर्टिकुलर फैशन में वो अलाइन हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव 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 और इधर नेगेटिव नेगेटिव। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक होगा इनसाइड द what substance, inside the substance means we can say that इधर नेट इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और नेट इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेट नेगेटिव चार्ज और नेट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इनसे मतलब अगर ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड such molecules together have no net dipole। यहाँ पे जब that is a very important point, try to understand this, when no electric field is there, net dipole is zero. When electric field is there, dipole moment is there. So in a single sentence we can say that in the absence of electric field, such molecules together have no net dipole moment in the non-conducting substance. Okay. When an electric field is applied across the substance, each dipole experiences a torque, and this torque tends to align the molecule in the direction of the applied field as shown in this figure, giving surface layer of positive and negative charges. The dipole moment, all molecules now get added and hence the substance has a finite net dipole moment in the presence of, means यहाँ पे एक finite net dipole moment create हो गया। And as you know that the dipole moment is created from negative to positive, negative to positive, ये dipole moment की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इन सिंपल वे पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें एक नेट डाइपोल क्रिएट हो जाता है, और पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं तो नेट डाइपोल जीरो होता है। बस इतना ही हमको समझना है, क्योंकि इस पोलर सब्सटेंस को हम कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो दिस इज अ पोलर सब्सटेंस। व्हाट इज द नॉन पोलर सब्सटेंस? नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट नॉन पोलर सब्सटेंस।